If you are watching this video, it means you understand English. But when it comes to speaking this language, you run out of words, you run out of sentences. Your mind doesn't get the right word at the right time. And this makes you look a underconfident guy. This makes you look a hesitant person. And that is bad for you. You know that very well. That is very bad for you. That is why I have decided to make a video on this topic that will help you with that problem. In this video, I am going to give you a step-by-step guide that will help you solve this problem. So let's get started and talk about that problem. So before I talk about the solution, let me tell you something. I come from a Hindi medium background. I live in a very small village. I had to learn everything from a scratch in this language, and I am sharing with you the things that helped me speak English fluently. Now I hope that the things that helped me speak English fluently will also help you speak English fluently. That is why I am on a mission to make you a fluent speaker in this language. Now let's get started and talk about this problem. First of all, let's understand why this keeps happening with you. What's the reason behind it? And let me tell you from my experience why this used to happen with me, so that you will be able to understand why this happens with you. The problem of going blank happens with you is because you are trying to translate everything from your native language into English, and there are things I believe that can't be translated into English from your native language. Maybe you can translate everything from your native language into English, but you might lose context. You might surely lose context. That's what you will do when you will translate everything from English, from your native language into English. You know what? When I noticed myself going blank while talking, I observed that I was literally trying to translate everything from Hindi into English, and there were things that I was not able to translate directly from Hindi into English. A problem with translating, guys, कि आपको अपने native language का हर वर्ड का मतलब इंग्लिश में पता होना चाहिए. ओनली देन यू आर गोइंग टू ट्रांसलेट योर मदर टंग इनटू इंग्लिश. अदरवाइज आप हेजिटेट करोगे बोलते वक्त. इन मेनी केसेस ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी वर्ड का इंग्लिश में मतलब पता नहीं हो, वहाँ पे आप ब्लैंक कर जाओगे. आप सोचने लग जाओगे कि यहाँ मतलब इंग्लिश में बोलते क्या है इसको. तो दैट्स वेयर मैं जो बता रहा हूँ वो काम आएगा. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. मुझे बोलना है कि मेरी माँ झूठ बोल ही नहीं सकती. ऐसा हो सकता है कि आपको झूठ बोलना का मतलब नहीं पता हो. इंग्लिश में क्या बोलते हैं, झूठ बोलना का क्या होता है आपको नहीं पता हो, तो आप कैसे बोलोगे मेरी मम्मी झूठ नहीं बोलती. भाई आपको पता है नहीं झूठ बोलना को, कैसे बोलोगे. तो मेरा फॉर्मूला ये था कि मैं इसको और कैसे बोल सकता हूँ. हाउ कैन आई से दिस इन अदर वे, लाइक माई मॉम इज ऑलवेज राइट. ऐसे भी तो हो सकता है माई मॉम इज ऑलवेज राइट. मैं ऐसे बोल सकता हूँ माई मॉम कांट टेल अ लाई. अगर मुझे टेल अ लाई का मतलब ही नहीं पता होता इंग्लिश में, तो मैं बोलता माई मॉम इज ऑलवेज राइट. ये होता है. एक सर हैं, क्या नाम है उस सर का मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो ये बताए थे. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि कोई बोल रहा है कि मैं तुम्हारे मांग का सिंदूर उजाड़ दूंगा. तो यहाँ पे आपको लिटरली इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए मांग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सिंदूर को क्या बोलते हैं, उजाड़ना को क्या बोलते हैं. यानी आपको हर एक वर्ड का मतलब क्या बोलते हैं इंग्लिश में याद रखना होगा. ओनली देन यू आर गोइंग टू ट्रांसलेट इट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश. तो यहाँ पे मैं कैसे बोलूँगा इसको और कैसे बोल सकते हैं, यानी कि मैं तुम्हारे पति को मार दूंगा, आई विल किल. ऐसे भी तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, मैं तुम्हें विधवा बना दूंगा, ऐसे भी बोल सकते हैं. तो आई विल किल योर हस्बैंड, आई विल किल योर हस्बैंड, ऐसे भी इसको बोल सकते हैं. द फर्स्ट स्टेप इज, अगर आप किसी भी सेंटेंस को नहीं बोल पा रहे हो, अगर आप सोचने लग जाओ, तो ये सोचो कि मैं इस सेंटेंस जो मैं बोलने वाला हूँ उसको एक अलग तरीके से कैसे बोल सकता हूँ. हाउ कैन आई से दिस इन अदर वे. तो ऐसे हो सकता है. दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप. एंड द सेकेंड स्टेप इज लर्न एवरीथिंग बाय टॉपिक. यू नो, थिंक अबाउट द टॉपिक्स दैट यू माइट हैव टू टॉक अबाउट इन द फ्यूचर. ऐसे टॉपिक्स के बारे में सोचो जो आपको फ्यूचर में हो सकता है कि आपको उसके बारे में बात करना पड़ जाए. जैसे रिलेशनशिप हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, कहीं पे आप शादी में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको किसी से बात करना पड़े. तो बी प्रिपेयर्ड ऑल द टाइम एंड watch videos for that on YouTube. What I used to do is I have already
topics prepared in my mind. When I am about to talk to someone, I am already prepared for that. So what I am saying here is learn about every single topic you might come across in the future. Now let's talk about the third step. The third step is write before you speak. Yeah, write about the topics you might come across in the future. By writing down about the topics you might come across in the future, what you are doing here is you are preparing yourself for the conversation in the future. Because when you will come across with the topic you have already prepared for, you will look confident while talking. What happens is when you come across with the topic you had already discussed in your notebook, you look confident in that conversations because you are already prepared for that. You already know what to say, you already know about everything you have to say, and that way your conversation goes smoothly and you look confident in the conversation. And this is what I used to do. I already prepared myself for the every conversation I was having. If you just do whatever I have just shared in this video, your problem of going blank is going to fade away. This is my guarantee. This is what I did to improve my fluency. So if you found this video helpful, I want you to just hit the like button, and I also want you to subscribe to this channel because it motivates me to make more videos. So until then, bye bye.